Assalamu alaikum students. I'm your principal course instructor for the subject of thesis, which is your major course in painting, Miss Anika Saidzia from University of Education Bank Road Campus Lahore, and the course code is FINE4125. And today we are going to cover the lecture number 23, and the topic is silhouette painting. So first we will see that what do we mean by a silhouette and what is the history of this silhouette word. A silhouette is an image done by an artist who who used to paint or cuts paper to create a person's portrait. Silhouettes are done in profile and highlight prominent facial features like chins, noses and hairstyles. तो जो सिलहाउट टेक्निक है वो हमें पेंटिंग में भी नज़र आती है, पेंटिंग के मीडियम में भी, एंड ऑल्सो इन द पेपर कटिंग्स, पेपर फॉर्मेशंस भी हमें नज़र आती हैं सिलहाउट की. Silhouette portrait by Charles Wilson Pale in the Library of Congress, Washington D.C. They look much like shadows. The name is French and comes from a French finance minister, one Antony de Silhaud, who was known for cutting likeness of people in profile. Now we will see the history of the word, this silhouette word. The development of silhouettes is linked to that of outline drawing and shadow painting. So इसमें हमें एक outline drawing भी नज़र आती है और एक shadow painting भी आप कह सकते हैं, because mostly it used to be found in a single color, done in single color. तो इसमें basically इसके contours के साथ हम identify करते हैं जो भी object है या जो भी face है उसको identify करते हैं इसके contours के साथ, because there have to be very light background if you are doing your silhouette in the dark color, or there should be very dark background if you are using or doing your silhouette painting in a very light color. Possibly originating in the cave murals of Stone Age, people, especially those in France and Spain, a realistic representation appears to have been first achieved by tracing the outline of an object's shadow, which was generally filled in with a flat color. Representation by profile drawing continued in the more developed images of the tomb paintings, relief sculpture, and pottery decoration of the ancient Egyptians, Mesopotamians, Minoans, Greek, and Etruscans. Ancient Greek and Roman painters devised methods of drawing the outline of a person's shadow cast by sunlight as well as by candlelight or lamplight. सो जो हमें एंशियंट ग्रीक और रोमन पेंटर्स मिलते हैं उन्होंने डिफरेंट वेज जो हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया था, इन्वेंट किया था, या आप कह सकते हैं एक्सप्लोर किया था, जिसमें वो सनलाइट के अंदर जब एक पर्सन का शेडो बनता है तो उसके साथ उन्होंने कुछ कैप्चर करने की कोशिश की है सिलहाउट्स को. और अगर आपके पास नेचुरल सनलाइट नहीं थी तो in candlelight also or in the lamplight they have captured the silhouettes of people. The last two techniques became widespread in 17th century Europe. The development of silhouettes is linked to that of outline drawing and shadow painting. As you can see, in the Greek civilization we used to see the pot painting, और इसके अंदर हमें जो फिगर्स नज़र आ रहे हैं दे आर बेसिकली डन इन silhouette because they are painted in just single color and with the help of contour line इनकी जो आउटलाइन बन रही है सपोज आर्म्स की, लेग्स की, फेस की, हम उसी के साथ उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं. अदरवाइज देयर इज़ नो सच tonal variation or there are no such different colors to identify different parts of body or any other colors in the drapery of human figures. So just एक ही सिंगल कलर है, चाहे ड्रेपरी है चाहे बॉडी है, देर इज जस्ट सिंगल वन कलर,
और जस्ट डार्क बैकग्राउंड होने की वजह से हम इजीली इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं फिगर्स को ऑन द राइट साइड। जबकि लेफ्ट साइड पे क्या है कि डार्क कलर में फिगर्स हैं, दैट्स वाई लाइट बैकग्राउंड है उसके परस्पेक्टिव में, so we can easily identify the figures in the foreground. Possibly originating in the cave murals of Stone Age people, especially those in France and Spain, realistic representation appears to have been first achieved by tracing the outline of an object's shadow, which was generally filled in with a flat color. ये वही बात है जो आपको मैंने previously explain कर दी है। Prehistoric cave paintings in Lescox, France. So केव पेंटिंग जो है उसके अंदर हमें डिफरेंट ऐसी आर्ट पेंटिंग्स मिलती हैं जो कि सिल हाउट के काफ़ी क्लोज हैं, बिकॉज दे हैव बीन डन इन द सिंगल कलर्स एंड इन डार्क आउटलाइंस और इन डार्क कलर्स अगेंस्ट लाइट बैकग्राउंड। सो हमें इतनी ज़्यादा टोनल वेरिएशन भी नहीं मिलती। सो फर्स्ट टाइम अगर हम कहें कि हमें ट्रेसेस मिलते हैं सिल हाउट पेंटिंग के, तो इट विल बी नॉट रॉन्ग टू से दैट वी हैव फाउंड इट इन प्री हिस्टोरिक केव्स। Andy Warhol. Pop art was the last prominent modern art movement. Its artists used recognizable imagery from popular culture like advertisements, celebrities, and comic book characters. So जो pop art हमें movement मिलती है, Andy Warhol was a very famous artist of that movement। और इस आर्ट मूवमेंट में स्पेशली जो है वो कमर्शियल काम किया गया है, और उसके अंदर हमें डिफरेंट एडवर्टिजमेंट्स और डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनके पोर्ट्रेट्स और उनसे रेलिवेंट जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स मिलते हैं जो आपके कल्चर सोशल कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसके अंदर इसमें इस आर्ट मूवमेंट में भी जो हमें काम नज़र आता है वो काफ़ी उसका जो रिजेम्बलेंस है वो सिल हाउट टेक्निक से है, बिकॉज वी यूज़ टू फाउंड डिफरेंट क्योंकि यहाँ इस आर्ट मूवमेंट में ज़्यादातर जो काम हुआ है वो पोस्टर्स की फॉर्म में हुआ है, प्रिंट्स की फॉर्म में हुआ है। तो पोस्टर्स और प्रिंट्स जो हैं बेसिकली दे यूज टू बी डन इन लेस टोनल वेरिएशन। हमें जस्ट 1 और 2 कलर्स में ही जो है वो एक पोस्टर नज़र आता है या बनता हुआ नज़र आता है। प्रिंट मेकिंग में भी सेम, आप हार्डली 2 कलर्स यूज़ करते हैं, जैसे ब्लैक एंड वाइट, या अगर आप डिफरेंट कलर्स भी कर रहे हैं तो आपके पास इतना ऑप्शन नहीं होता है दैट यू गो इन डिफरेंट कलर्स। सो दैट्स वाई एक सिल हाउट पेंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें यहाँ पर रिजेम्बलेंस उसकी नज़र आती है और उसका यूजेज नज़र आता है। Abdullah Qureshi makes large-scale gestural paintings of silhouettes that are vastly monochrome in color, and he is interested in urban queer cultures. His visuals are a result of personal and intimate conversations about relationships with friends and family. This first-hand knowledge is meant to shed light on the sentimental and emotional side of man that is lost in masculinity and are the source of his subjective paintings. So basically अब्दुल्ला कुरैशी जो है वो मेल फिगर्स को पेंट करते हैं और जो है सिल हाउट टेक्निक को फॉलो करते हुए, एंड जो आइडिया उनका है ही यूज टू एक्सप्लोर द सॉफ्ट साइड ऑफ मेल्स। जो एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है हमारी सोसाइटी में दैट अ मैन शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग और शुड बी वेरी very powerful and brave, and use he don't have any need to cry um, like girls. So basically चाहे मेल्स हैं फीमेल्स हैं, both are human beings, both are living beings, living creatures। सो ये पॉसिबल नहीं है, ये अननेचुरल है, नॉन रियलिस्टिक है कि जो कोई भी लिविंग बीइंग है उसको पेन ना हो और वो जो है उसको एक्सप्रेस ना कर सके। तो उस चीज़ को जो है आर्टिस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं अपनी पेंटिंग्स में कि जो आदमी हैं उनको भी दर्द होता है, दे कैन ऑल्सो हैव सॉफ्ट कॉर्नर एंड दे ऑल्सो हैव इमोशंस एंड फीलिंग्स। सो ये चीज़ हमें नज़र आती है इनके काम में। एज यू कैन सी द होल
figure has been painted in just one color against the black background, and the title of the painting is Not a Commander. The artist uses her skills to perfectly execute her paintings in traditional styles but sets them in a contemporary environment in order to discuss imminent issues. Amongst other things, her contemporary images are influenced by uh, colonial illustrations, designs from Middle Eastern textiles, botanical paintings, and silhouettes. Uh, सो इनकी बात हो रही है नुसरा लतीफ़ कुरैशी की. An isolated female figure is always represented either in the background or foreground of her paintings, breaking the conventional rule of having mainly male figures in Mughal miniature paintings and also subconsciously personifying the artist itself. जो हमें मुगल मिनिएचर पेंटिंग में कॉन्सेप्ट नज़र आता है कि उसमें ज़्यादातर मेल फिगर्स और मेल एम्परर्स हमें नज़र आते हैं डोमिनेंट करते हुए पेंटिंग्स को. तो उस चीज़ को आर्टिस्ट ने उस मोनोटनी को ब्रेक किया और फीमेल फिगर्स को वो स्पेस दी है. द राइट कैच.